अस्सलामु अलैकुम क्लास 11th बायोलॉजी के प्यारे स्टूडेंट्स। बॉटनी स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका दिल से खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लिविंग वर्ल्ड इन टाइम और बायोलॉजिकल मेथड को डिटेल से समझेंगे। ये टॉपिक्स आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, खास तौर पे पंजाब बोर्ड के एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली इमेज, लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। एक, लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। सिंस द टाइम ऑफ origin of life on this planet, various organisms were evolved and dominated this planet during various periods of geological time chart. Evidence comes from fossils, which allow biologists to place organisms in a time sequence. As geological time passes, new layers of sediments are laid down over older layers without disturbing them. It is possible to date or age rocks by comparing the amounts of certain radioactive isotopes they contain. The older sediment layers have less of these specific radioactive isotopes than the younger layers. A comparison of the layers shows the relative age of the fossils found in the rocks. Therefore, the fossils found in the same layer must have been alive during the same geological period. Urdu. जिंदगी के शुरू होने से लेकर अब तक मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए और डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स में डोमिनेट किए। एविडेंस फॉसिल से मिलता है। जियोलॉजिकल टाइम के साथ नई सेडिमेंट लेयर्स पुरानी लेयर्स पर जमती जाती हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप से रॉक्स की एज निकालते हैं। पुरानी लेयर्स में आइसोटोप्स कम होते हैं। सेम लेयर के फॉसिल सेम टाइम पीरियड के होते हैं। की आइडिया, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। इन अनडिस्टर्ब्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, द लोअर लेयर्स आर ओल्डर and the upper layers are younger. Urdu, law of superposition के मुताबिक undisturbed rocks में नीचे वाली layers पुरानी और ऊपर वाली नई होती हैं. Temporal distribution table shows different eras like Cenozoic, Mesozoic, Paleozoic with plants and animals that lived in those periods, from first living organisms about 3,000 million years ago to recent times. 2. Phyletic lineage. When we look at biodiversity, we find that there are nearly 2,500,000 species of organisms currently known to science. More than half of these are insects, 53.1%, and another 17.6% are vascular plants. This list is far from complete. Estimates put the total number of species between 5 and 30 million. Out of these, only 2 to 5 million species have been identified so far. The life today has come into existence through phyletic lineages, or evolving populations of the organisms living in the remote past. Evolutionary change produces new species and increases biodiversity. A phyletic lineage is an unbroken series of species arranged in ancestor to descendant sequence. If we had a complete record, every lineage would extend back to the common origin of all early life. We lack that record because many soft-bodied organisms did not leave fossils. Urdu. अभी तक nearly 25 लाख species known हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा इंसेक्ट्स हैं। टोटल स्पीशीज 5 से 30 मिलियन तक हो सकती हैं। लाइफ फाइलेटिक लिनिएजेस के थ्रू आई है। फाइलेटिक लिनिएज एंसेस्टर से डिसेंडेंट तक स्पीशीज की अनब्रोकन सीरीज है। की टर्म्स, फॉसिल, रिमेन्स और ट्रेसेस ऑफ एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स, रेडियोएक्टिव आइसोटोप, अनस्टेबल फॉर्म यूज्ड टू डेट रॉक्स, फाइलेटिक लिनिएज, लाइन ऑफ डिसेंडेंट्स फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। Quick summary. Geological time divided into eons, eras, periods. Fossils help study evolution. Biodiversity has millions of species. New species arise through time via phyletic lineages. Ab Dusri image. Biological method. 1. What is science? Science is a systematized knowledge. Biological science also has a set methodology. It is based on experimental inquiry and chance observation. Observation, made with 5 senses, can be qualitative or quantitative. Hypothesis, a tentative explanation or possible answer to a question, formed by deductive or inductive reasoning. 2 ways of formulating hypothesis. Deductive reasoning moves from general to specific. Example, all birds have wings, sparrow is a bird. Therefore, sparrow has wings. Inductive reasoning moves from specific to general. Observation of many birds having wings leads to conclusion all birds have wings. Urdu, science systematized knowledge है. Observation 5 senses से होती है, qualitative या quantitative. Hypothesis tentative explanation है. Deductive general से specific,
inductive specific से general. Other ways to form hypothesis: intuition, aesthetic preference, religious ideas, comparison, discovery while looking for something else. Testing of hypothesis. Repeated testing increases confidence. If never falsified, it is accepted. Good theory is predictive and explanatory. Theory and law. Series of hypotheses supported by many tests becomes a theory. If a theory survives continuous testing, it becomes a scientific law. Scientific law is a uniform or constant fact of nature. Examples of biological laws: Hardy-Weinberg law and Mendel's laws of inheritance. Key takeaways. Science uses systematic methods, observations qualitative or quantitative, hypotheses tested again and again. Theories are well-supported explanations. Laws are universal facts. Biology has few laws because of complex nature of life. Urdu. Science systematic methods use करती है. Hypotheses बार-बार test होती हैं. Theory well-supported explanation. Law universal fact. Biology में laws कम हैं क्योंकि life complex है. Dear students of Botany Study Hub, इन दोनों topics को अच्छे से revise करें. Geological time, phyletic lineage, scientific method, hypothesis और theory law का difference याद करें. पंजाब बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत important है. चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें. Best of luck. Study smart, score high. Allah Hafiz and thank you for watching.